अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपना न्यू चैप्टर जो कि है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को क्लास हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, नरगिस के फूल भी कहते होते हैं। इफ़ यू ऑल रिमेंबर, जब हमने स्टार्ट किया था इस बुक को तो हमने कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स पे पढ़े थे, डैफोडिल्स का भी हमने बारे में डिस्कस किया था। सो डैफोडिल का हमने कुछ थीम डिस्कस किया था कि डैफोडिल क्या है। सो इफ़ यू ऑल रिमेंबर और इफ़ यू आर नॉट रिमेंबरिंग, इट्स ओके, वी कैन रिव्यू इट अगेन। डैफोडिल्स बेसिकली नरगिस के फूल हैं। इसमें क्लास ए एक पोइम है। अब इसमें एक नेचर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, रिगार्डिंग द नेचर, द रिव्यूज ऑफ द पोइट अबाउट द नेचर, दैट हाउ इज ही लविंग द नेचर। वो नेचर की एक एक चीज़ को, उस फ्लावर की खूबसूरती को किस तरह से वो डिफाइन कर रहा है। हाउ इज ही एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स ओवर दैट एक्सपीरियंस दैट ही इज लिविंग ओवर देयर राइट नाउ। सो ये हम सब कुछ इस पोइम में पढ़ेंगे। अब इस पोइम का जो पोइट है वो कौन है? इस पोइम की जो क्लास पोइट है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्होंने ये पोइम लिखी है। ही इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम एंड वी आर गोइंग टू review the views of William Wordsworth that he experienced by viewing daffodils. Okay class, so let's begin with it. I hope you're gonna love this poem. So let's begin. सबसे पहले क्लास हम स्टार्ट करते हैं, इस पोएम के अबाउट को पढ़ते हैं. What is overview of this poem? So open up the books, page number 32, and let's begin with it. Daffodil is one of the William Wordsworth's most famous poems. It was inspired by a walk Wordsworth took his sister Dorothy near Ullswater in Lake District, April 15, 1802, where they encountered a long belt of daffodils. William Wordsworth, 1770-1850, was a key figure in English Romantic movement. Born in Cockworth, England, he developed a deep love for nature, which became a central theme in his poetry. Wordsworth believed that nature had the power to inspire and heal the human spirit. So class, the basic theme and the basic overview of this poem is that we will be discussing about the nature, that how Wordsworth is loving the nature. उन्होंने कितनी खूबसूरती से उसको बयान किया है, बताया है. Along with that, a mini history of William Wordsworth is also given, that how he discovered daffodils, with whom he went to see daffodils. So he went to see daffodils with his sister Dorothy, and along with that, where he was born and his nature, his romanticizing thing and loving the nature is mentioned in this passage. So let's begin with reading the poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So, class, in this stanza, firstly, I'm going to tell you about difficult word meanings along with a synonym. Then we will be discussing its translation and the questions given to us, okay? Okay class, now let's begin with some difficult word meanings that are mentioned in the first stanza. So as you can see, I have mentioned some of the words over here which I feel will be difficult for you. So let's begin with the translation along with the meanings of this word. Wandered, जैसे कि आप देख सकते हो क्लास, यहाँ पे पहली लाइन लिखी थी, I wandered lonely as a cloud. Wandered means to roam, घूमना, ठीक है. तो wandered का मतलब क्या होगा? roamed. roam, wandered, इसको उर्दू हम कहते हैं क्लास घूमना. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वेल्स. वेल्स का बेसिकली सिनोनिम है, कंप्लीट जो वर्ड बनता है, दैट इज वैली. ठीक हो गया. वेल्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम वैली, सो द सिनोनिम विल बी वैली. और हम क्लास वैली को उर्दू में क्या कहते हैं? वादी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्राउड. क्राउड होता है क्लास गैदरिंग होना, बहुत ज़्यादा रश होना एक प्लेस पे. सो इसका सिनोनिम क्लास हमारे पास बनता है गैदरिंग. उर्दू में हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लोगों का होना.
बहुत ज़्यादा लोग. Now next word is host. होस्ट यहाँ पे क्लास दिया हुआ था, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. होस्ट मीन मतलब होता है प्रेजेंट करना, यानी प्रेजेंटर. सो होस्ट सिनोनिम होगा हमारे पास क्लास प्रेजेंटर. अ होस्ट इज अ प्रेजेंटर. प्रेजेंटर होस्ट का मायने क्या होता है क्लास? हम उर्दू में इसको कहते हैं मेज़बान. कहा जाएगा इसको, देखिएगा, मेज़बान. ठीक है. नाउ द सेकेंड लास्ट वर्ड इज बिनेथ. बिनेथ मीन्स अंडर, किसी चीज के नीचे होना. सो बिनेथ का सिनोनिम क्या है हमारे पास? अंडर. उर्दू में इसको कहते हैं क्लास नीचे. ठीक है. नाउ द लास्ट वर्ड इज फ्लटरिंग. फ्लटरिंग का क्लास क्या मीनिंग होता है? फ्लटरिंग का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग मतलब होता है यहाँ पे सिनोनिम फ्लैपिंग, फ्लिकरिंग. सो द सिनोनिम विल बी फ्लैपिंग और फ्लिकरिंग. ठीक है. अब इसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? फ्लटरिंग करना, फ्लटर करना, फ्लैप करना, फड़फड़ाना. So class, these are the words along with the synonyms and its meaning in Urdu. I hope you all can see them very clearly. हमने एक एक वर्ड का सिनोनिम और मीनिंग यहाँ पे लिख दिया है. अब हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं इस पैसेज की उर्दू ट्रांसलेशन को. So let's begin with the Urdu translation of this passage. Sorry, the stanza translation. So shall we begin, class? Before that, take out your registers and pencils and do write it down in your registers or notebooks, whatsoever you're having right now. So let's begin the translation. I wandered lonely as a cloud. एक दिन मैं तन्हा घूम रहा था जैसे एक बादल. That floats on high over vales and hills. जो पहाड़ों और वादियों में तैरता है. When all at once I saw a crowd. जबकि अचानक मैंने एक हजूम देखा. A host of golden daffodil. सुनहरे गुलनर्गिस का हजूम. Beside the lake beneath the trees. झील के किनारे के नज़दीक और दरख्तों के नीचे. Fluttering and dancing in the breeze. वो हवा में झूम और नाच रहे थे. So class, ये हमारी फर्स्ट स्टेंजा की ट्रांसलेशन थी. I hope it's very clear to all of you. In case you are facing any sort of difficulty, you can look after the words that I have mentioned over here for the meaning and synonym. Now class, as you can see, हमारे फर्स्ट स्टेंजा के साथ हम एक छोटा सा बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं. So let's discuss these questions as well one by one. The first one is, who is the speaker in the poem and what is he doing in the beginning? So class, speaker कौन है इस poem का? विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक हो गया जी. एक पार्ट हमने क्लियर किया कि विलियम वर्ड्सवर्थ is the speaker of the poem. And what is he doing in the beginning? वो beginning में क्या कर रहे थे? He was wandering lonely in a valley. ठीक है, वो एक जगह पे घूम रहे थे. So क्या होगा क्लास इसका आंसर? The speaker of this poem is William Wordsworth and he was roaming lonely in the valleys and hill. This will be the answer of the first question. Now let's move towards the second question. Which natural element is compared to it in the first line? So class, कौन सा natural element को हमने compare किया है in the first line? In the first line we have compared the natural element that is a lonely cloud. ठीक है, lonely cloud को compare किया गया है. Now moving towards the third question, where does the speaker encounter the daffodils and how are they described? So speaker कौन है? William Wordsworth. Where did he encounter daffodils? So beside the lake beneath the trees. ठीक है, the speaker encountered daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. That's how he encountered and he described the daffodils.